Okay, solid example, example 2. Equivalent conductivity of sulfuric acid at infinite dilution is 384 ohm inverse centimeter square per equivalent. Equivalent conductivity at infinite dilution. Look at the unit, it is important. Ohm inverse yani Siemens centimeter square per equivalent. Now there were two parameters which are important to remember. The first parameter is molar conductivity, which is represented by lambda m, and the other is equivalent conductivity, which could be represented by lambda eq. Now what was the formula for molar conductivity? 1000 K by C. 1000 K by C. And when we say molar conductivity, the C is the molar concentration. Yani yahan par we take the molarity. Versus when I say equivalent conductivity, it means it will be equal to 1000 K by C equivalent. Now this equivalent concentration is nothing but normality. And what is the relation between molarity and normality? Normality is molarity into N. N factor. The relation is with respect to n factor. Barabar? So we know that normality is equal to molarity into the n factor. Matlab this part I can write as 1000 K by Cm into n factor. Chalega? Yes, sir. So can I get the relation of lambda equivalent and molar conductivity? It will be lambda eq equal to lambda m upon n factor. So no need to remember, you can derive it simply by writing the molarity and normality in the denominator. Okay. Secondly, the units part is very important. Molar conductivity had the units of Siemens, centimeter square, mole, inverse. And जो equivalent conductivity है, that is the unit of Siemens centimeter square equivalent inverse. Equivalent inverse. So in the question, this part is missing. Just add on to the question, unit missing hai. Ohm inverse ke baad, it will be centimeter square equivalent inverse. Okay, so now whenever you see equivalent conductivity, it's similar to molar conductivity, but instead of the molar concentration, you take the normal concentration or simply normality. This is the difference. Got it? Yes, sir. Next, if 49 gram per liter H2SO4 is present in the solution and its specific resistance is 18.4 ohm, then what would be the amount of dissociation of the solute? Amount of dissociation of the solute. Alpha. What do you mean by amount of dissociation? Alpha. Yes, we have to find alpha. Now there was a relationship between alpha and the molar conductivity. What was that? Alpha is lambda m by lambda m. Correct. The degree of dissociation for a weak electrolyte is a ratio of molar conductivity at any concentration to the molar conductivity at infinite dilution or zero concentration. So जैसे यहाँ पर we have lambda m by lambda m naught, I can also have lambda eq by lambda eq naught. बराबर? हाँ सर. Yes, sir. So to get alpha, lambda eq naught का value तो already दिया हुआ है, which is 384. But lambda eq जो है that would be found using the formula. अब क्या लगाएंगे formula lambda eq का? lambda m by n factor. Lambda m by n factor. Yes, directly ये formula ले लो ना. अब मोलर कंडक्टिविटी दिया नहीं है, ये तो रिलेशन मैंने जस्ट बताया आपको, वरना इसका नॉर्मल फॉर्मूला जो है जस्ट टेक दैट 1000 into k by normality. बराबर?
अब K जो है that is specific conductance और अपने को दिया हुआ है यहाँ पर specific resistance. K के दो नाम है, one is specific conductivity, specific conductance and दूसरा conductivity. So how is K related with specific Inverse. resistance? Inverse. Inverse. मतलब K की जगह I'll just take 1 upon 18.4 and the normality. Now normality भी directly नहीं दिया है. We know that normality is number of gram equivalents upon the volume of the solution in liter, right? Yes, sir. Now number of equivalents is given mass upon the equivalent mass. What is the given mass? 49 gram. 49 gram upon what is the equivalent mass of sulfuric acid? 49. 49 because it's 98 by 2, na? And what is the volume given in liters? What is the volume? 1. Per liter मतलब 1 liter. So सब कुछ cancel off हो रहा है, मतलब the normality is 1. So यहाँ पर I'll substitute 1. So the answer is 1000 by 18.4, which comes out to be 55. समझा? हाँ sir. So now I can substitute alpha के लिए 55 in the numerator upon 384 in the denominator. And when you divide, you get the answer is 0.14. Yeah, alpha is 14%. The percentage dissociation. Understood? Yes, sir. So from this question, the equivalent conductivity का formula needs to be remembered 1000 K by C molar की जगह C equivalent, wherein you are supposed to substitute normal concentration or normality. ठीक है? Then alpha is found by lambda EQ by lambda EQ naught, similar to the formula which we had seen for molar conductivity. And the units are very important to be remembered. Okay. Third one, equivalent conductivity. previous slide के ऊपर जाओ ना. हाँ हो गया. Equivalent conductivity of ammonium chloride at infinite dilution is 150 centimeter square ohm inverse equivalent inverse. Once again unit में थोड़ा गड़बड़ है वहां पर, just make the unit proper in the question. It's given centimeter cube. Yeah, so just cancel off that. Centimeter square, centimeter cube, centimeter inverse, centimeter square हो जाता है, but just इस format में लिख लो, centimeter square ohm inverse equivalent inverse. Okay. Equivalent conductivity of ammonium chloride at infinite dilution is 150 and ionic mobilities of OH minus and Cl minus are given respectively. Then what should be the equivalent conductivity of ammonium hydroxide at infinite dilution? Infinite dilution. Now the moment you read infinite dilution, क्या strike होना चाहिए? Zero Concentration. That is Kohlrausch law. So Kohlrausch law is used to find the molar or equivalent conductivity at infinite dilution of a what type of electrolyte? Weak electrolyte. Weak electrolyte. तो यहाँ पर हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है उसका लैम्बडा EQ नॉट फाइंड करना है, and we can find this with the help of strong electrolyte का data, which could be a strong acid, strong base or a salt. तो हमें देखो क्या दिया है डेटा में, लैम्बडा EQ नॉट ऑफ अमोनियम क्लोराइड दिया है, लैम्बडा EQ नॉट ऑफ OH नेगेटिव आयोनिक मोबिलिटी इसका दिया है, और लैम्बडा EQ नॉट ऑफ Cl नेगेटिव. So now, how do you get ammonium hydroxide from this data? Plus OH minus Cl. First will be added, second will be subtracted. Khatam? Now it's just a matter of substituting the values and you get the answer. So it will be 150 plus 198 minus
76.5, which gives you 271.5 unit would be Siemens centimeter square equivalent inverse. So infinite dilution word से Kohlrausch law strike होना चाहिए. Application is it is used to find the lambda EQ naught of a weak electrolyte with the help of strong electrolytes. 10th, why does gold not get rusted in the atmosphere? What is a simple reason to this? It's a noble metal. Noble It's a metal. noble metal and it does not react with the atmosphere or moist air. Whatever. Now this can also be confirmed through the electrochemical series and the reactions associated with the gold and oxygen. So if it is presumed that gold also gets oxidized in the atmosphere, अगर ये हम assume करते हैं तो the half reactions would be gold undergoes oxidation and forms auric ion Au plus 3. And these electrons will migrate towards oxygen, and oxygen in the presence of H plus coming from carbonic acid will undergo reduction. So now if you look at the EMF values, it's minus 1.42 and 1.23 volts. So potential of the cell, when you calculate, it is found out to be minus. और अगर EMF नेगेटिव है, इसका मतलब the reaction is Not possible. क्या बोलते हैं उसको? non Spontaneous. So EMF series में if you consider two electrodes and calculate the EMF of the cell using the formula of cathode minus anode, and if you get the EMF negative, then the selection of the cathode and anode is wrong, meaning that cell won't work, that reaction would never ever be feasible, meaning it is non-spontaneous. So since the potential is negative, the reaction does not get completed. So just the application of electrochemical series for understanding the corrosion. कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा. Clear? Yes, sir. Okay, starting with exercise 1. 1 hash का part. Which of the following statement is true for an electrochemical cell? H2 is anode and copper is cathode. Is this true? If I have a galvanic cell made up of copper and hydrogen, yani SHE, how do you decide which will be cathode, which will be anode? Oxidation reduction. Oxidation will be anode and reduction will be cathode. But how do you decide which will be the The cathode and SRP values. the SRP values? और shortcut दिया है ना मैंने, ऊपर वाला, ऊपर देखो, ऊपर वाला cathode. So we know So that with hydrogen respect will to be SHE, cathode. copper is ऊपर and ऊपर वाला will become cathode because its SRP value is greater than the SHE. So SHE has to become the anode. So is the first statement correct? Yes, sir. It is true for an electrochemical cell. So option 2 wrong hai. H2 is cathode and copper is anode. No. Reduction occurs at hydrogen. Does it? No, sir. Anode पे हमेशा Anode पे Oxidation. होता है. And does oxidation occurs at copper? No. Copper पे क्या होगा? Reduction. तो अगर मैं इसका cell reaction आपसे पूछूं तो can you write the cell reaction? Help me with that. Yes, cell reaction क्या होगा? Cu plus 2 plus 2 electrons. अरे half reaction मत बताओ directly reaction. Plus H2. So copper will Plus be H2. lower na. See, it will be hydrogen undergoing oxidation. तो H2 से 2H plus बनेगा. And copper का reduction मतलब Cu2 plus से Cu बनेगा. That's how you should write the cell reaction now. अब half reaction लिखकर net reaction नहीं लिखना है आपको. Sir. हाँ,
So, but copper comes lower in the series, right? कॉपर कम्स लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने बचपन में पढ़ा था 10th में. ये हम ईएमएफ सीरीज की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल व्हिच इज इनवर्स ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज व्हिच यू हैव लर्नड. Yeah. ये बहुत बार बोल चुका हूं मैं. Yeah. With respect to SHE, the species which have a tendency to undergo reduction, meaning the non-metals and the noble metals, comes upper, and the metals which are highly reactive, they will come down below SHE. Yeah, So this sir. is EMF series, and what you are talking about is reactivity series, जो एक दूसरे का उल्टा होता है. Yes, sir. I got confused. Fourth one, which is not true for a standard hydrogen electrode, the primary reference electrode. Is the hydrogen ion concentration 1 molar? Yes. 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 Is the temperature 25 degrees Celsius? Yes, sir. Yes. 298 Kelvin, yes. Pressure of hydrogen 1 atmosphere? Yes. sir. Yes. Fourth It contains wala- a metallic conductor one. which does Fourth not absorb hydrogen. False. ये false है because there is a metallic Platinum. conductor used, platinum, which is also absorbing the hydrogen gas on its surface. So absorb भी गलत है, यहाँ पर So, adsorb. but between absorption, na absorption. करेक्ट. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट में दो प्रॉब्लम है. एक तो डज नॉट वाला पार्ट और वो एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब होना चाहिए. ओके. Yes, sir. Yes. Next, the chemical reaction taking place in a galvanic cell is represented by the notation. तो अब क्वेश्चन में सेल रिएक्शन दिया है और सेल का रिप्रेजेंटेशन पूछा है. तो थ्रू द रिएक्शन पहले क्या करना पड़ेगा? Half reaction. Half reaction लिखना पड़ेगा. हाफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा. चलो लिखते हैं. बोलो क्या लिखूं? Ag Ag2 will plus oxidation. So Ag2 हाँ, Ag will undergo reduction. Ag plus 2 1 Ag plus 2E minus equal to 2 Ag. okay. Can you identify the type of the electrode for me? gas electrode. Pardon? So कौन सा? metal sparingly A fast soluble sparingly salt. soluble. Yeah. 2AgCl से जो Ag दे रहा है, along with if I break down this 2H plus and 2Cl minus, चलेगा क्या? Yes. So now first observation is 2AgCl giving you 2Ag plus 2Cl minus. This is metal sparingly soluble salt electrode, and H2 से H plus वाला is a gas electrode. Yes, बराबर. sir. Now cell notation में आपको क्या चाहिए? Yes, एनोड sir. कौन सा है, कैथोड कौन सा है? So यहाँ पर the 2AgCl वाला metal sparingly soluble salt electrode is cathode या anode? Cathode. Cathode. And the Cathode. hydrogen gas electrode is Cathode. Anode. 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 समझा? Yes, sir. समझा? Yes, sir. From the cell reaction, you understand that the type of electrodes are metal sparingly soluble and gas electrode. Secondly, through the redox, you can understand that the sparingly soluble salt is undergoing reduction. तो अब अगर half reaction लिखो थोड़ा और आसान हो जाएगा. It will be easier to understand. So oxidation half reaction में hydrogen will lose 2 electrons to form 2H plus. चलेगा? Yes, sir. And Yes, these sir. 2 electrons will migrate towards the cathode and will undergo reduction. That is, twice of AgCl will gain 2 electrons to form 2 Ag and Cl minus ऐसे का ऐसा ही रहता है. अब we can write the cell notation या cell का representation. बोलो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखें? Anode. Platinum. Platinum, then in contact with H2 gas. H2 gas. H2 gas, Two gas. in direct contact with H plus. H plus, and this H plus will be in contact with HCl.
HCl, not HCl, it will be in One contact with AG. na. AG. Naik. CL. AgCl. Ag. Ag plus. अरे बाबा, मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में 3 चीजें होती है जिसको मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में बोला है. It consists of a metal which is in contact with its sparingly soluble salt and dissolved in a solution containing anions of the salt. So सबसे पहले अनायन जो आयन है उसके बाजू में क्या आएगा? 1 molar Iron. आयन ही आएगा. कौन सा आएगा? CL. Cl माइनस. तो यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट लिखते हैं, फिर Cl माइनस. ऑप्शन को अभी मत देखो, जस्ट फॉरगेट द ऑप्शंस आर गिवन. Cl minus, फिर in contact with AgCl solid and then in contact with Ag solid, right? Yes, sir. Yeah. अब if you observe HCl is present in the same solution, मतलब ये दोनों indirect contact में नहीं है, it is in Direct contact. direct contact. तो चाहे आप HCl लिखो या फिर H plus और Cl minus single vertical line के साथ लिखो, is it going to make a difference? No, sir. No. It's equivalent to writing HCl aqueous. Now can you spot the option? Third. Third one. Third one. H2 गैस स्टैंडर्ड है तो 1 बार या 1 ATM, ये 1 मोलार हो जाएगा ओवरऑल, और बाकी सॉलिड्स के कॉन्सेंट्रेशन हम लिखते नहीं हैं. सो द आंसर इज ऑप्शन 3. समझा? तो यहाँ Yes, पर sir. बोथ द हाफ सेल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. कोई भी इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा इधर. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 7th, in the galvanic cell of copper with silver, the electrons will travel in the external circuit from. Electrons will travel from. Electrons Cu to travel Ag. from Cu to Ag, from anode to cathode, because anode is negatively Yes. charged. मैंने डेनियल में बताया है आपको, जब जिंक प्लस 2 के कांटेक्ट में लिखते हैं इनडायरेक्ट कनेक्टेड विद कॉपर 2 प्लस कॉपर. तो यहाँ से यहाँ दिखाया था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रेवल करते हैं. एंड करंट, अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो इट विल बी फ्रॉम कॉपर टू जिंक. Zinc. So the Yeah. electrons in galvanic cell always flows from anode to cathode. So इस केस में copper to silver. Clear? Yes, sir. Keep marking the answer. Yes. Applications of EMF series. पहला, adding powdered lead and iron to a solution containing 1 molar in each of lead and ferrous ions, it would result into the formation of more of lead and ferrous ions, more of iron and lead ions, more of iron and lead, more of ferrous and lead plus 2 ions. ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे? We have the information about lead and iron. तो सबसे पहले क्या करेंगे? Identify the cathode and anode. Very good. So identify. तो हमेशा रेफरेंस तो अपना SHE, with due respect given to SHE, where will be lead and iron placed? Below. That will be the Both are below. Yeah, both. And उन Yes, दोनों sir. में कौन ऊपर है? PB. Lead. lead. Because I had given the entire sequence after SHE. It's Latin, Nico, CAD, FC, ZA, MNC, Kali. याद है? Latin Yes, यानी sir. lead और tin, Nico, CAD, nickel, cobalt, cadmium, FCZA, iron, chromium, zinc, aluminium, MNC, magnesium, sodium, calcium, Kali is potassium and lithium. Needs to be remembered, very important, because यहाँ पर आपको SRP values नहीं दी जाएगी. Okay, Yes. so lead and iron is placed like this. From this, ऊपर वाला Cathode. and Cathode. नीचे वाला. Anode. Anode. No. Correct.
Yes. So this, if I were to write the cell reaction directly, tell me क्या लिखूं? Quick. PB2 PB2 plus 2 plus PB. Fe PB2 plus Fe. Fe. So Fe हो रहा है ऑक्सीडाइज यानी फेरस और लेड हो रहा है रिड्यूस, खत्म. एंड 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2. इतना इंफॉर्मेशन क्लियर है? Yes, sir. अब if you add powdered lead and iron to the solution which is containing 1 molar of lead and ferrous ions, then as the reaction progresses, iron is undergoing oxidation, Oxidation. and lead ions are undergoing Reduction. reduction. So now logically tell me what would be the answer. The first Will one. increase. First one. And Fe2 plus ion. Product More. will increase. Product. PB2 plus से जब PB बन रहा है मतलब the size of the electrode of lead will Increase. increase and Fe will generate more of ferrous ions. So overall there will be Decrease. more of lead and Fe2 plus ions. ये orally भी हो Yes. जाता. The moment you see lead and Fe यहीं पे underline करके I can सीधा write lead बनेगा अपना कैथोड और आयन बनेगा एनोड. तो कैथोड में जो मेटल का रॉड है उसका साइज बढ़ेगा और एनोड में जो ऑक्सीडाइज्ड आयंस है वो बढ़ेंगे. सो आंसर इज फर्स्ट. क्लियर? Yes, sir. Second, the standard oxidation potentials E0 for the half reactions are as given. Zinc का and iron का is given. The EMF for the cell oxidation is E0 of cathode minus Second one. E0 of cathode minus anode. Minus 1.17. Minus 1.179. 0.35 plus 0.35. You have minus to zero. consider reduction potentials. Very of all. good. That is the first observation. We never work with SOPs. We always work Yes, with sir. SR. SRPs. मतलब E0 of zinc is always Zn2 plus से Zn वाला reaction which will become negative of what is given, and E0 of iron will be again negative of what is given. बराबर? Yes. अब decide करो which is cathode which is anode based on SRP values. ये नीचे वाला कैथोड है. कौन सा? Fe is cathode. Fe is Fe cathode. ऊपर आता है, zinc Zn नीचे आता is है. anode. So the E0 of this cell will be equal to E0 of cathode यानी Fe minus E0 of Zn. Yes or no? Yes, sir. So Fe का value minus 0.41 minus of minus 0.76. So ये minus minus plus होकर we will get the answer as plus 0.35 volts, right? Yeah. Correct. So the answer is option 1. So 2, option Option 1 2. is negative. Sir, हमारा आंसर हमारा आंसर This is 1 ही होगा. reduction. Oh, and we have to Because find ये जो हमने oxidation. फाइंड किया है वो SRP वैल्यू ऑफ द सेल है. उन्होंने क्या पूछा है? Oh. द EMF फॉर द सेल ऑक्सीडेशन, SOP. यानी उन्होंने पूछा है SOP ऑफ द सेल. Oh. Yes. समझा? तो ये वाले क्वेश्चंस में आपका मैग्नीट्यूड में प्रॉब्लम ना आकर साइन में प्रॉब्लम आ सकता है. क्लियर? So just remember single formula that E0 of the cell is E0 cathode minus anode, where these E0 values are the SRPs always. So in case question में SOPs अगर दिया है, never work with SOPs. देने के लिए मैं फॉर्मूला वो भी दे दूं, but unnecessary multiple formulas याद करने की जरूरत नहीं है. Just remember one standard formula, work it accordingly, and you get your answer. As simple as that.
सो मैंने SRP में कन्वर्ट किया, E नॉट ऑफ द सेल का फॉर्मूला अप्लाई किया और पूछा था SOP, तो जस्ट निगेट करके आंसर मार्क कर दिया। Yes, क्लियर? sir. सर लेकिन एसओपी दिया है तो हम एसओपी भी तो डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं देने के लिए SOP का फॉर्मूला दे सकता हूँ, कुछ होगा नहीं, खाली आपको ये स्विच करना है बस। अच्छा अगर आप इस सबको स्विच कर दोगे ना विद द साइन चेंज, देन यू गेट द SOP का फॉर्मूला, बट अननेसेसरी वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जस्ट वर्क विथ वन फॉर्मूला, दैट इज SRP वाला फॉर्मूला, बेटर होगा वो आपके लिए। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट, strongest reducing agent is, how do you find this? Potassium. How do you find this? Don't tell me the answer Lowest. first. Lower in the Lowest in series. the Lower in electrochemical the series, series. मतलब आप चारों को with respect to SHE अरेंज करोगे। चलो बताओ, ऊपर कौन जाएगा, नीचे कौन आएंगे, और क्या सीक्वेंस होगा? I first. I will be ऊपर, next AM. AL, फिर MG. MG and then K. K. and then K. So K जो सबसे लोवेस्ट है, मतलब लोवेस्ट SRP का वैल्यू, इसका मतलब it undergoes oxidation and will behave as a strong Reducing. reducing agent. और ऊपर वाला in the options given has the highest value of SOP. SRP, SRP. SRP, SRP. Sorry. Will So will undergo undergo reduction. Reduction. and will behave as Oxidizing. Oxidizing agent. oxidizing agent. Clear? यस सर। Zinc cannot displace following ions from their aqueous solution. Zinc किसको displace नहीं करता? Again, how will you answer Lower. this? What was the SRP. rule? An element बोलो बोलो। which is lower than Zn in the series, it won't displace it. करेक्ट, जिंक के नीचे वाला आयन डिस्प्लेस नहीं होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का रूल सिंपल था कि लोअर डिस्प्लेसेस Higher one. अपर, याद है ना? फॉर हाँ। मेटल्स द रूल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लोअर डिस्प्लेसेस अपर, बट फॉर नॉन मेटल्स Upper, lower. अपर डिस्प्लेसेस लोअर। Displaces. तो Na प्लस होगा सर आंसर। आंसर Na प्लस है, परफेक्ट है। वापस देखो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कितना काम आ रहा है। SHE को हमने रखा, ऊपर की तरफ कौन कौन है और क्या सीक्वेंस है, बोलते जाओ। AgCu. AgCu, AC याद रखना है। फिर Fe. Fe, Na. Na, और अपने को जिंक भी रखना था ना, तो यहाँ पे जिंक आएगा FCZa, 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 राइट राइट। Yes, sir. So zinc Yes, sir. can't displace sodium from its solution, but it can displace iron, copper and silver का ions. ठीक है? Yeah, sure. Yes, sir. So rule of displacement. अच्छा, if I talk about fluorine, chlorine, bromine, iodine. Bromine can displace Iodine. only iodine and not chlorine या Chlorine fluorine. and Chlorine of fluorine. Correct. So if bromine displaces iodine, मतलब bromine will undergo अरे ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला है Reduction. एक ही चीज को यार इतना मिस्टेक्स के साथ देख रहे हो तुम लोग। ऊपर वाला इज कैथोड विल ऑलवेज अंडरगो रिडक्शन, नीचे वाला इज एनोड विल ऑलवेज अंडरगो ऑक्सीडेशन। व्हेन आई से ऑलवेज इट मींस ऑलवेज, क्वेश्चन चेंज के साथ ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा है। सो ब्रोमीन का रिडक्शन मतलब Br2 विल चेंज टू Br minus. Br माइनस, एंड आयोडीन का ऑक्सीडेशन मतलब
2I minus 2I minus will change to I2. I2. So कई बार ये भी पूछते हैं, is this reaction feasible? Yes. Yes. The reaction is feasible, yes. समझा? Yes. So if I write Cl2 plus 2F minus giving you 2Cl minus and F2, tell me, is this feasible? No. No, sir. No, because chlorine is undergoing, Reduction. chloride is undergoing. Oxidation. Is that possible? No. No. Am I clear on that? Yes. So I'm talking about multiple things in the same MCQ. आगे कुछ इससे related MCQ या कोई और examples आप solve करो, you should be in a position to understand. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Seventh Yes. is important. The position of some metals in the electrochemical series in decreasing electropositive character is given as magnesium, aluminium, zinc, copper, and Ag. Decreasing electropositive character. What will happen if a copper spoon is used to stir a solution of aluminium nitrate? The spoon will get coated with aluminium. An alloy of copper and aluminium is formed. The solution becomes blue and there is no reaction. कॉपर का चम्मच aluminium के नाइट्रेट को स्टर करने के लिए यूज कर रहे हैं. मतलब you can see that the reaction would be copper with aluminium 3+, wherein copper should undergo oxidation and Oxidation. aluminium should undergo Reduction. reduction. अब क्वेश्चन ये है, क्या ये रिएक्शन feasible है? No. नहीं. क्यों? Copper should undergo reduction. Yes. Copper undergoes कॉपर reduction. हैज टू अंडरगो Reduction. रिडक्शन क्योंकि कॉपर ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे है. मतलब ये जो रिएक्शन है वो feasible है ही नहीं. अगर feasible नहीं है, इसका मतलब No reaction. there will be no reaction. बट अगर एल्यूमिनियम का स्पून कॉपर के सोल्यूशन को स्टर करने के लिए यूज किया, हाँ. तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होकर कॉपर रिड्यूस होगा. Yes. Yes. समझा? तो ये रिएक्शन तो फिजिबल रहेगा ना सेकंड में. हाँ, यस यस, मतलब feasible. क्लियर So है? then, so then copper will be plated on the spoon. यस, एल्यूमिनियम के ऊपर कॉपर का प्लेटिंग आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज Electroplating. electroplating. Okay, sir. Electroplating by use of electrolysis or plating of one metal onto the surface of another is called electroplating. वही तो फंडा है. Yes, sir. This is also an important question. The E naught of M3 plus to M2 plus. What does this representation refer to? What type of Redox. electrode? Very Electrode. good. सबसे पहला observation, it is a redox electrode. And the values for chromium, manganese, iron and cobalt are given respectively. For which one of these metals the change in oxidation state from +2 to +3 is easiest? ये change का मतलब क्या है? Oxidation. Oxidation. मतलब क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसका ऑक्सीडेशन सबसे Easy. इजी होगा. तो बेस्ड ऑन द वैल्यूज व्हाट विल यू लुक एट? Lower SRP. Lowest. लोवेस्ट Lowest SRP किसका है? chromium. एंड दैट्स Chromium. द आंसर. खत्म. समझा हिंट? हाँ The सर. change Yes, from sir. +2 to +3 is oxidation, and oxidation आसानी से होना, इसका मतलब the SRP value has to be least. अच्छा, और एक चीज, redox इलेक्ट्रोड में मैंने इन्हीं चार का ऑर्डर भी देकर रखा है आपको EMF सीरीज के साथ.
कैसे याद रखने बोला था इसको? Common fake row. Common fake row. Very good, very good. Redox electrode में wherein there is a change from 3+ to 2+. इनमें the SRP order is common या common fake row. आप वैल्यूज देखोगे तो कोबाल्ट हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 1.97 followed by 1.57, 0.77 and -0.41. तो ये कई बार डायरेक्ट भी पूछा गया है एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्डर टू बी मग्ड अप एंड टू बी रिमेम्बर्ड. यहाँ तो वैल्यूज दिया था, वेल एंड गुड. ना दिया हो तो ये चार तो याद रखना है. कॉमन फेक रो, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड 3+ to 2+ का ऑर्डर. अच्छा मान लो पूछा आपसे +3 से +2 किस में आसान है? Cobalt. Highest, Cobalt. sir. फॉर कोबाल्ट. एंड +2 to +3 जो पूछा था दैट वुड बी फॉर क्रोमियम. क्लियर? Yes, sir. Good enough. Next, the standard reduction potential, meaning SRP, at 25 degrees Celsius of lithium, barium, sodium, magnesium are given respectively. देखो अगर आपको ये वैल्यूज ना भी दिया हो तो मैंने आपको पूरा सीक्वेंस देकर रखा है. Yes, sir. उसके बेसिस पे तो डायरेक्ट आंसर हो ही जाएगा. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? SRP should be highest. Oxidizing agent. SRP should be तो हायर एसआरपी किसका Highest. है? Magnesium. MG का है. Mg. Mg2+. एवरीवन -2.7 ना? Yes, sir. Mg2+ का. अच्छा मान लो कई बार ना Mg2+ और Mg भी ऑप्शन में दिया जाता है. और सेम क्वेश्चन कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर क्या होगा? Mg2+. आंसर यही होगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में द स्पीशीज अंडरगोइंग रिडक्शन इज व्हाट? Mg2+. इसीलिए आंसर ये आएगा. समझा? अब सुनो एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको. वी नो दैट मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, MnC एंड Kli का ऑर्डर ये है. और यहां पे पूछा जाता है आपको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. व्हाट विल बी द आंसर? K. अब Potassium. ऑप्शन में K और K. K+ दोनों दिया है तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? K. K. It will be K because K is undergoing Oxidation. oxidation. K+. मतलब अगर आपसे सुनो ध्यान से, if oxidizing agent is asked, you will mark the iron या metal? Iron. Iron. Mark the Iron. iron. If a reducing agent is asked, Mark the Metal. metal. mark the metal. रीजन साफ है, फिर भी कई बार बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है अगर ये दोनों दिया हो तो. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिडक्शन होता है और रिडक्शन किसका होता है? आयन का. रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन किसका होता है? Metal का. मेटल का. समझा? हाँ, sir. So in this, if all the three options are given and the fourth option is Mg, so we'll mark the ion which is after the Mg2+, right? Pardon? So in the 12th one, instead of Mg2+, if the option is Mg, then what? Then it what is. will you? It is a wrong option. So The then answer we'll will. select from first three, na?
नहीं नहीं, क्योंकि वैल्यूज के हिसाब से तो Mg2+ ही है ना, दे हैव टू गिव Mg2+ एज द ऑप्शन, अदरवाइज फिर स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट की बात कर रहे हैं ना हम, तो Mg2+ ऑप्शन में रहेगा ही। Okay, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes. Now concept of delta G and the Nernst equation. Delta G is a thermodynamic parameter which gives you the information about electrical work which is done. Galvanic cell जब spontaneous redox reaction undergo करता है, then it converts the chemical energy into electrical energy. So in conversion of chemical energy to electrical energy, there is some amount of electrical work which is being done. Yes? Yes, Hello. sir. And this electrical work is given as, what is the formula? Delta G naught in terms of E naught. NF E naught. NF. F into E naught. करेक्ट। अच्छा, अब ये फॉर्मूला कैसे आया उसका जस्ट एक शॉर्ट समरी बताता हूँ। हाउ डू यू डिफाइन वर्क? Force into displacement. Work is force into displacement. And when I Yes, talk sir. about electrical work, we are talking the amount of work which is done in terms of the electricity passed. Yes, sir. And in that terms, we define the work as charge into potential. Difference. Potential. पढ़ा है ये? Yes, Yes, sir. sir. So now, while undergoing a spontaneous redox reaction, the amount of the charge transferred is n mole of electrons. अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन गेन की बात करते हैं, तो the charge transferred we take as 2 mole electrons. Yes, sir. और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम्स में कितने के बराबर है? 96500. 65. 96500 कूलम्बिक चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर होता है। So this Yes. n mole electron is nf coulombs. Yes or no? Yes, sir. So that is the reason we are taking the charge as nf, and the potential of that cell is E naught of the E cell, naught. Yeah. and that's why we get the formula as nf and E naught. समझा? Yes, sir. एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो रिवर्स हो जाता है when we compare to the electrolytic cell, Yes, sir. क्योंकि पोलैरिटी स्विच हो रही है ना. So that is why we say here there is a reversible work which is being done, and the reason of reversible work, because of that reason we take a negative sign over here. Minus. समझा? Yes, sir. Yes, sir. Electrical work is charge times the potential. The charge in a galvanic cell is NF and the potential is E naught of the cell. That's how we get NF E naught. And since the work done is reversible, irreversible का मतलब भी thermodynamics में clear हो जाएगा, ठीक है? तो उसी की वजह से we are taking a negative charge. Concept clear? Concept of delta G. Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन पे Yes, आते हैं. sir. The standard electrode potential for the reaction of silver and stannous at 25 degrees Celsius are given respectively. हमेशा जब भी रिएक्शन के साथ वैल्यू दिया होगा ना, तो ऑब्जर्व करो कि वो रिएक्शन कौन से फॉर्म में दिया है.
कौन से फॉर्म में हमें अच्छा लगेगा? Reduction. हैज टू बी रिडक्शन, तभी जो वैल्यू होगा दैट वुड बी कॉल्ड SRP. ओके. Yes, sir. So now, based on these values, the EMF of the cell is asked. So the EMF of the cell is equal to E naught of, कौन बनेगा कैथोड, कौन बनेगा एनोड? Ag will be Ag will be cathode. cathode and tin will be Anode. Anode. एनोड. वैल्यूज ना भी दिया हमें पता है, Ag SHE के ऊपर है और tin नीचे है कि नहीं? Yes, sir. Yes. So I'll write sir. Ag plus with Ag and SN2 plus with SN. Understand this notation. So the answer will be 0.8 minus of minus 0.14, which becomes 0.94 volts. Option 4. सर Hmm. मुझे डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट नहीं समझा बरोबर जो आपने ऊपर बताया. See, delta G, सबसे पहले याद रखो, it's a thermodynamic parameter called Gibbs free energy. पहली बात. The Gibbs free energy with respect to a galvanic cell gives you the information about the electrical work which is done by the galvanic cell. आपका बैटरी क्या काम करता है? केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है, it converts to electrical energy. So it is doing some work to produce electricity. That work is called electrical work, which is given as product of charge and potential. अब कोई भी गैल्वेनिक सेल में टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इज n मोल इलेक्ट्रॉन्स के बराबर. एंड एक मोल इलेक्ट्रॉन एक फैराडे के बराबर होता है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन nf के बराबर होगा. तो चार्ज को ले लिया nf, और पोटेंशियल ऑफ द सेल इज E नॉट ऑफ द सेल. E naught of the cell. तो फॉर्मूला बन गया माइनस nf E नॉट ऑफ द सेल. एंड माइनस इसलिए लेते हैं बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है दैट इज रिवर्स्ड, एंड वी से द वर्क डन इज रिवर्सिबल. इसीलिए वी टेक अ नेगेटिव साइन. क्लियर? क्लियर? हाँ सर. Okay. Next, the reduction electrode potential E of 0.1 molar solution of M plus ion is E naught RP, यानी reduction potential दिया है. अब क्या बोला है? reduction electrode potential. So if the condition is non-standard, किसको याद करने का? Nernst equation. Nernst equation. And Nernst equation could be used to find EMF under non-standard condition of a cell or even of a Half cell. half cell. So before we write Nernst equation, what is the primary important thing? Net reaction. Half cell reaction. Half. Net reaction कब लिखोगे? जब सेल की बात कर रहे हैं. Half cell के लिए you will write only आधा reaction ना? Yeah, sir. So tell me, what is the half cell reaction to be written here? Yes. M plus plus one electron gives gives M. तो बोलो ना जल्दी जल्दी. M plus 1 electron gives you M. Correct. Yes, sir. बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नर्स्ट इक्वेशन के लिए. अब नर्स्ट इक्वेशन ब्लाइंडली इट इज E ऑफ इलेक्ट्रोड इक्वल टू E नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड यानी हाफ सेल माइनस 0.06 अपॉन N. n क्या है? 1. अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा. into log to the base 10. QC. So M. 0. जीरो नहीं लेते, इसका यूनिटी लेते बाबा. Solid, na? 1. Okay. सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिटी नॉट जीरो. Okay. यूनिटी मतलब 1 लेते हैं अपॉन M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज दैट गिवन 0.1. 0.1. 0.1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
10 so 1 10 log 10 हो जाएगा 1. अब E नॉट ऑफ आरपी दिया है -2.36 एंड -0.06 कितना आ रहा है? 2.14 14 नहीं 41 42 आ जाएगा ना. Yes, sir. Now since we have taken 0.0592 का 0.06 we are getting this value. But option के हिसाब से तो आंसर क्लियर है ऑप्शन 1. Understood? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकंड प्रायोरिटी पे ईएमएफ सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस और बाद में फेराडेज लॉज और वो सब आते हैं. नेक्स्ट, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी. प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर और कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1. अगेन पोटेंशियल किसका ढूंढना है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का. तो सबसे पहला काम क्या करोगे? half reaction हाफ रिएक्शन. क्विकली बताओ कैसे लिखे हाफ रिएक्शन? H plus plus 1 electron. H plus 1 electron gives H. H. 2. H ऐसे लिखते हैं. 2H plus gain 2 electron to give H2 gaseous और ये aqueous. अब यहाँ का concentration 0.1 मोलार दिया है और pressure 1 atm दिया है. करेक्ट? yes sir फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से E of electrode equal to E naught. E naught कितना है? 0. माइनस 0.06 upon 2 0.06 by 2 into log to the base 10. मतलब pressure of 1/0. hydrogen प्रेशर upon ऑफ हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिखता हूँ. प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन concentration of H plus H plus का concentration स्क्वायर. सो 1 upon 0.1 स्क्वायर. राइट? yes yes sir ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 100 100. बाहर आएगा तो 2 2 cancel बचा क्या? minus 0.06 स्पॉट द आंसर. second क्योंकि 0.06 मतलब 0.0592 वाला वैल्यू है ना. सो आंसर इज ऑप्शन 2. क्लियर? Next, how much will be the potential of a hydrogen electrode change when its solution, initially at pH equal to 0, is neutralized to pH equal to 7? Potential कितना change होगा when the pH is changed from 0 to 7? किसका पोटेंशियल का बात कर रहे हैं? hydrogen electrode तो अगेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का EMF था E of EL equal to E naught minus 0.06 by 2 into log to the base 10 pressure of hydrogen by H plus का स्क्वायर. करेक्ट है? Yes. तो अब केस 1 pH equal to 0 का मतलब H plus कितना हुआ? हाँ pH is minus log to the base 10 H plus. इतना बेसिक पता है? वो पता है. हाँ. तो we can write H plus concentration if pH is given as 10 raised to minus pH. yes sir नेगेटिव इधर ले 10 raised to पावर रेस करो. आया समझ में? yes sir So if pH is 0, what is H plus? 1 molar. Understood? Yes. And pressure के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब you take it as 1. 1. So now E in the first case will be equal to 0 minus 0.06 by 2 into log to the base 10 1 by 1 square.
क्या आया? 0. What is log 1? 0. What is 0 into 0.06 by 2? 0. तो बोलो ना जल्दी. अब सर केस 2. बोल रहा ना 0. जोर से नहीं बोला, मैंने सुना नहीं. चिल्ला के बोल. H plus pH equal to 7 है तो 10 raised to minus 7. so वापस E of the second case would be 0 minus 0.06 by 2 into log to the base 10 1 upon 10 raised to minus 7. का 14. स्क्वायर, तो minus 14 ऊपर जाएगा तो Yes, sir. Plus 10 raised to 14. बाहर आएगा तो 14 divided by 2 7. 7 into 0.06 0.42. 0.042. 042 नहीं 0.42. हाँ सर वही. अच्छा वही. ओके. एक जीरो में क्या फर्क पड़ता है, इधर उधर चल जाता है. तो क्या सर? So now from 0 how much is the decrease? 0.42. 0.4 volt. So answer is option 4, decreased by 0.4. Clear? Yes, Yes. sir. So जब pressure भी दिया जाएगा then substitute the value of non-standard pressure also. Don't forget that. 4 hash. Application of Nernst equation in different type of electrodes and cells. The EMF of the cell given is 0.83. So EMF of this cell will be increased by increasing the concentration of cupric ions, decreasing the concentration of titanium plus, increasing the concentration of both, या 1 and 2 both. How do you answer this? EMF कैसे बढ़ाएंगे? 1 and 2 both. That is the answer. How? Approach. E naught of the We'll cell. identify through the representation, which is the cathode and anode, and then E- increase the reduction potential of the cathode. Increase the reduction potential. Reduction potential. Concentration. Concentration of the Concentration. product. concentration. Yes, concentration. तो किसका concentration बढ़ना चाहिए और किसका घटना चाहिए? कैथोड का Cathode का बढ़ना का चाहिए और anode का एनोड का घटना and चाहिए. So titanium should copper decrease. should increase and Ti should decrease. Ti plus should decrease. Correct. And you can also confirm it by the Nernst equation. Yes, sir. ठीक है, तो मैं आपको Nernst equation का मेथड भी बता देता हूँ, बाद में शॉर्टकट भी देख लेंगे. So if I were to write the cell reaction using this, बोलो डायरेक्टली कैसे लिखूं? Titanium would undergo Oxidation. and copper will undergo. reduction. Is it balanced? Yes, sir. Yes. No, it's not. No. 2 Ti. 2 Ti. 2 Ti. जहाँ पे +1 है वहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ना. देखो हाँ, सर. अगर डायरेक्ट Yes, रिएक्शन sir. लिख रहे हो तो इसका ध्यान रखो कि आपको आता है तो लिखने का, वरना हाफ रिएक्शन लिखो फिर नेट रिएक्शन लिखो. और वैसे ये सिंपल, इफ द चार्जेस आर सेम देन नो नीड टू बैलेंस. इफ दे आर नॉट सेम देन जहाँ पे आपका +1 था उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे कि नहीं. Yes, sir. और Yes. रिएक्शन हाँ, लिखने सर, के बाद करो ना. ये भी पता चल जाएगा कि n की वैल्यू 2 है. बराबर. Yes, sir. Yes, Nernst sir. equation में E of the cell is equal to E naught of the cell, help me everyone, minus 0.06 0.06 upon 2 into Log to log the base 10 10. of 0.001. Ti raised to 2. Ti plus Concentration of values Ti की जरूरत नहीं है. Ti plus का square. square square. upon copper 2 plus, Upon- right? हाँ बस. अब if I want to increase the EMF then this whole part should be added to the E naught. Yes. Yes. अगर E naught से ये वाला पार्ट ऐड होगा तो ही तो EMF बढ़ेगा. Yes, sir.
अब इस पार्ट को बढ़ाने के लिए आई नीड टू मेक दिस टर्म, लॉग ऑफ दिस टर्म Negative. नेगेटिव, Negative. और वो नेगेटिव कब बनेगा? व्हेन द न्यूमरेटर इज Smaller than smaller than the denominator. denominator. Hence, conclusion remains the same. Ti plus should Decrease. and Cu2 copper 2 plus plus increase. should Increase. increase. To increase the EMF of cell. समझा? Yes, sir. हाँ सर. Okay. And even आपको E of the cell पूछा जाए तो just substitute the values over here which are given. ये non standard values है ना? 10 raised to minus 4 और 10 raised to minus 2. तो यहाँ पे substitute करके you could find out the EMF. Next, which graph correctly correlates EMF of a cell as a function of concentrations for the cell? Reaction दिया है, E naught value is given. Y axis पे E cell लेना है और X axis पे log to the base 10 zinc plus 2 और Ag plus का ratio लेना है. Any problem related to graph should be solved by Mx plus C. writing the equation. Generalized equation. Perfect. Generalized equation. And in this case, how can you get a general equation? कौन से फॉर्मूला से मिलेगा? Y equals to mx plus C ना, so Nernst equation. Nernst equation. बस हिंट सिंपल है. आप Nernst equation लिखो, y axis और x axis देखो क्या है, उसको y equal to mx plus c के फॉर्म में देखो and there you are. The answer is simple. चलो let's write. E of the cell equal to E naught. अब डायरेक्ट वैल्यू लिखो चलेगा ना? 1.56 दिया है ना? हेलो? हाँ सर. Yes sir. 1.56 minus 0.06 by 2. 2 into 2 log to the base 10. log to the base 10 Zn2 plus upon Oxidized ion upon reduced Ag. Yes. and Ag plus का square हो जाएगा. यहाँ पर भी square होना चाहिए. This one. Yes sir. So now you are plotting a So graph second one is the answer. of E of the cell versus the log of the concentration. Yes. So this becomes your y-axis. This is x. So it is Mx equivalent plus to C. mx plus c. So slope कितना आ रहा है? Sorry, y-intercept कितना आ रहा है? Minus 0.03 and y-intercept 1.56. and slope negative है, मतलब it should be a decreasing line. 0.0. Second वाला graph. Yes sir. So answer Decreasing. is second वाला graph, option 2. समझा? हाँ सर. याद रखो कोई भी ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी देखा है, you just write the standard relation and see which is the y-axis and which is the x-axis, and if you get a general relation, you should be able to identify the graph correctly. Yes sir. Next, cobalt in contact with cobalt plus 2 with a concentration C2, indirect contact with cobalt 2 plus concentration C1 in contact with cobalt. Now, एक important चीज यहाँ से, whenever a galvanic cell is made up of same electrodes, made up of Same. electrode, that galvanic cell is called a concentration cell. Please make a note of this. Yes sir. A concentration cell is a galvanic cell which is composed of Same electrode. same electrodes. चलो इसकी खास बातें पहले बता देता हूँ. अगर दो
इलेक्ट्रोड सेम रखा है, तो व्हाट वुड बी द ई नॉट ऑफ द सेल? 0. ऑफ कोर्स, बिकॉज कैथोड भी वही है, एनोड भी वही है, हाँ वही तो एसआर भी सर. सेम है. सो ऑब्वियसली कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट हमेशा 0. 0 आएगा. बट व्हाट कैन यू कमेंट ऑन ई ऑफ द सेल? It is minus negative ना, that minus 0.06 upon 2 वो It will वाला. be E naught minus the log wala part. बराबर, हाँ, and log that वाला. would be dependent on what concentration of the ions are present. हाँ. Yes. Yes sir. बराबर. अब concentration cell का reaction लिखना भी important है. So अगर मुझे cell reaction हाँ. लिखना है तो एक बार कोबाल्ट होगा CO2 plus. ऑक्सीडाइज और दूसरी बार होगा कोबाल्ट Reduce. रिड्यूस. अब जब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन? C2. हाँ, C2. कोबाल्ट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. ये एनोड है ना C2. अपना, C2. तो ये हाँ. वाला होगा C2, राइट? Yes sir. Yes, sir. वाला जो रिड्यूस हो रहा है वो C1 होगा. Yes sir. एवरीवन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, Hmm. सबसे पहली बात, concentration cell is a galvanic cell composed of same electrodes. In that case, the E naught of the cell is always going to be 0, and the E of the cell would be dependent on what are the concentration of the ions or the pressure of the gas if it is a gas electrode. Correct? Yes sir. So if I want to write the Nernst equation, it will be 0 minus 0.06 by 2 into what is the ratio? C2 by C2 C1. by C1. C2 by C1. समझा? Yes sir. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. इस कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, वो कंडीशन पूछा है. C2 And greater E than cell is And positive. E cell is positive. वेरी गुड. डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए ई सेल शुड बी Cell is पॉजिटिव. positive. Positive. ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव. और ई सेल को पॉजिटिव होने के लिए ये वाला लॉग टर्म Log हैज टू is बिकम Negative. Negative. हाँ, नेगेटिव. कब negative. होगा? व्हेन C2 इज Great. less than C. Less than C1. C1. C2 is less than C1. That's option 2. मैंने 4 चीजें यहाँ पर बताई. कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, उसका E नॉट 0 होता है. E ऑफ द सेल डिपेंडेंट है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. और सेल रिएक्शन में कौन सा कहाँ पर जाएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. समझा? Yes sir. Mark it as important and note down the 4 points. Concentration cell, an important concept, entrance point of view. लिखा? Yes, sure. Okay. Sixth one. What will be the EMF for the given cell? What is your observation looking at the notation? Same electrode. Once again, it is a Concentration cell. Concentration. concentration cell, and concentration cell का E naught तो 0 होता है. EMF will be dependent on concentration of the ion and the pressure of the gas. Yeah. And to write that, we need to first always Nernst equation को बिना cell reaction लिखाना Pap. पाप है, पाप. It's a crime. चलो, don't commit the crime. Tell me, how do you write the cell reaction now? H2 plus 2H plus 2 gives अच्छा, just a minute. I'll write PT H2 gas, pressure P1 in contact with H plus, concentration C1, indirect connected with H plus, concentration C2, and then H2 gas, pressure P2 and platinum. अब इस केस में ये H plus का concentration उन्होंने कॉमन रखा है, मतलब इट इज सेम.
लेकिन मान लो अगर डिफरेंट हो तो हम नस्ट इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन सेल ऑफ SHE. आ रहा है समझ में? हाँ. चलो इसके लिए बताओ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, क्विक. H2 plus 2H plus. 2H plus gives 2H plus H2. अब इसके नीचे जो वैल्यूज लिखने जा रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट. टेल मी. P1, 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 C2, वेरी गुड. C1, C2 नहीं, C1 नहीं, C1 C1 नहीं. P1 के सामने यहाँ C1 and Yes. P2. हाँ, P2. एंड C2 के सामने यहाँ P2. P2. इसलिए मैंने चारों चीज बता दी आपको. समझा? Yes, sir. और अब इसका नस्ट इक्वेशन लिखा जाएगा एज E of the cell equal to 0 minus 0.06 by 2 into log to the base 10. Tell me QC. QC बोलो. H plus C1 P. P1 आप डायरेक्टली वैल्यूज बोलो ना. वैल्यूज. C1 C1 square square C2 into P2 P2 upon to P2. C2 square square. into P1. C2 P. समझा? Yes, sir. yes sir. हाँ sir. सो अब जो नोटेशन अपने लिए दिया है, इस केस में C2 एंड C1 वाज कॉमन, तो ये वाला पार्ट उड़ जाएगा. उड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. एंड उस केस में इफ आई अप्लाई द नस्ट इक्वेशन, द E of the cell will become minus 0.06 by 2 into log to the base 10 P2 by P1. Yes or no? Yes, sir. Yes sir. They have given in the form of RT by F. तो RT by 2F into ln आ जाएगा. And the ratio won't change. It will be P2 by P1 only. चलेगा क्या? RT जब Yes, sir. substitute करते हैं तो we get 0.0592 here. Tell me the answer. All are positive given Second one. because negative of P2 by Negative. P1 would become positive of Yes. P1 by Yeah. P2, na? Yes, sir. So the answer is option 2. तो मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड वाला एग्जाम्पल भी बता दिया यहाँ पर, एड ऑन करने का अपने नोट्स में. ठीक है? So if all the 4 values were given, the QC would have been like this. If only 2 are given, then accordingly you have to write the Nernst equation. कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है? Yes, sir. Next, at 25 degrees Celsius, the standard EMF of cell having reactions involving 2 electron change, So is found to be 0.295 volts. The equilibrium can you just constant go to of the previous one? Once. Yes sir, 1 minute. Allow them this way. Yes sir, done. At 25 degrees Celsius, the standard EMF of cell having reactions involving 2 electron change is found to be 0.295 volts. The equilibrium constant of the reaction is, we had a direct formula for equilibrium constant. थियरी में बताया हुआ है मैंने फॉर्मूला. E naught is equal to 0.06 upon n into log to the base 10k. Perfect. E naught of the cell is equal to 0.06 by n into log to the base 10 k equilibrium.
कैसे आया ये भी बताया था. The moment we have the condition of equilibrium, the E of the cell becomes equal to 0 and the QC becomes equal to KC और KP और in general equilibrium constant यही तो है. Yes or no? And delta G of the cell भी तो 0 हो जाता है. तो equilibrium जैसे आया, तीन चीजें हैं यहाँ पे याद रखना है. So now the E naught is given to be 0.295, 0.06 by 2 electron change दिया है and log to the base 10 K equilibrium. So this will become 0.03. 0.03 and 0.295 को almost कितना लो? 0.3. 0.3. So 0.03 into 10 is 0.3. Yes, sir. So now what we are getting is log of K equilibrium is 10. So K equilibrium will be 100. Sorry, 10 raised to 10. 10 raised to 10 is the answer. And जब equilibrium constant बहुत high value का रहता है, it means the reaction is in the which direction? Spontaneous, मतलब it is in the forward Forward direction. direction. Forward. समझा? Yes, sir. Which represent a concentration cell? First one. First one. Should be simple. Faraday's law. W gram of copper deposited in a copper voltmeter when an electric current of 2 ampere is passed for 2 hours. If 1 ampere current is passed for 4 hours in the same voltmeter, copper deposited will be Same it will remain. why? Because V is directly proportional to IT. QIT. W So is 2 into- directly proportional to the quantity of Yeah. electricity passed. And the Yeah. quantity of electricity is 2 into 2. 2 and 1 into 4. And here 1 4. into 4. So when the Q remains same, will the W change? No, sir. No. So answer will be same, W. 7. The ratio of weights of hydrogen and magnesium deposited by the same amount of electricity from aqueous sulfuric acid and fused MgSO4 are same amount of electricity. क्या strike हुआ? Second law. Second law. And entrance point of view. Equivalent weight. हाँ क्या लेंगे? Equivalent weight of H2SO4 upon the equivalent weight of MgSO4. And what is that equal to? Say Faraday's second law simply says that W is proportional to E. So you are supposed to find the weight of hydrogen to the weight of magnesium. What will that be equal to? You told the right hand side right. But Yes, वो W sir. का ratio होता है ना? E of Yes, H2 sir. upon E of Sir, I was Mg. just saying the right hand. Ah, okay. So equivalent weight of hydrogen is how much? 1. 1. And magnesium is upon 12. 12. 12. 24 by 2. 12. That's 12. So option 2. ठीक है, इक्विवेलेंट की वेट की बात आई है तो मैंने 3 गैसेस का एक टेबल दिया था. 3 गैसेस बोलो कौन कौन सा? Oxygen. Chlorine and Chlorine and hydrogen. ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन. उसके 2 कॉलम्स में वैल्यूज दिया था.
एक तो equivalent weight And volume. and equivalent volume, right? Yes. And the sir. values Yes, were, sir. and the values were 1. 1, 1. 33.5. 35.5. 35.5, 8. 8. 8. Don't mess up with oxygen. Many a times you tend to take it as 16 and that's wrong. Okay, it's 1, 35.5 and 8. Equivalent volume were 11.2. 2. 11.2. 2. And even the third 5.6. one. No, ये 1/4 हो yeah, जाता yeah. है Yes, because the sir. n factor here is 4 and the n factors here were 2. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Theory में काफी कुछ बता चुका हूँ. You have to just apply it properly. Next, an ion is reduced to the element क्या when previous it. पेज लिखना हो ना? देख ले भाई, हो गया हो गया. इतना जल्दी क्या देख लेते हो? नहीं तेरे point. Okay, an ion is reduced to the element when it absorbs 6 into 10 raised to 20 electrons. Number of equivalents of the ion is 1 is 6 into 10 raised to 23. 3. The third option one, will be third one. 20 raised you have to 20. simply divide this by Into 10 Into raised 10 to raised to 23. 23. Avogadro's number, ना? Yes, sir. देखो, always remember 1 Faraday का charge is equal to 1 mole electron, and that's equal to 6 into 10 raised to 23 electrons, Avogadro number. And when you multiply 6 into 10 raised to 23 with 1 electron ka charge, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs, that's where you get 96500 coulombs. तो एक फैराडे, एक मोल इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन्स, 96500 कूलम, वन एंड द सेम. बराबर? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इक्विवेलेंट्स आपको फाइंड करना है, तो जस्ट डिवाइड दिस बाय एवोगैड्रो. So 10 raised to 20 upon 10 raised to 23 will give 10 power minus 3, which is 0.001. Option third. Clear? Next, electrolysis can be used to determine atomic masses. A current of 0.55 ampere deposits 0.55 gram of a certain metal in 100 minutes. Calculate the atomic mass of the metal if N is equal to 3. Atomic mass. What should you apply? First law, Faraday. First law. First law. अब फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला भी है और यूनिटरी मेथड भी है. ZIT. W equal to ZIT, या फिर जस्ट अप्लाई द यूनिटरी मेथड. आई विल प्रेफर यूनिटरी मेथड, ज्यादा अच्छा है वो, बिकॉज थ्रू द यूनिटरी मेथड यू कैन ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम फॉर द गैसेस इफ आस्क्ड. क्योंकि W equal to ZIT में यू गेट द वेट, बट वॉल्यूम ढूंढने के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. इसलिए फॉर एंट्रेंस फैराडेज फर्स्ट लॉ के लिए जस्ट अप्लाई द यूनिटरी मेथड. क्या है यूनिटरी मेथड? चार्ज वर्सेस मास. So we know that 1 Faraday का charge, which is equal to 96500 coulomb. always the equivalent liberates mass. or deposits equivalent mass of the Equivalent metal, mass. which is molar mass upon the n factor. N factor. What is n factor here? 3. 3. 3. And m तो ढूंढना है ना. Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. And एक information आपको दिया है कि if the current is 0.55 ampere for 100 minutes, यानी 100 into 60, don't forget that. उसके लिए the weight M.
is 0.55 gram. 0.55. समझा? Yes. Yes, sir. Just cross multiply 0.55 into 96500 equal to 0.55 into 100 into 60 into m by 3. 0.55 0.55 गया, कैंसिल, 2 zeros उड़ गया, 2 0 गया, 60 और 3 20 हो गया. So molar masses 965 can be approximated to 1000. So the answer will be approximately nearly Third one. 50 gram per mole. Looking at the options, closer to 50 is option 3. समझा? Yes, sir. Next, an electrolysis of a oxy-tungsten complex using 1.1 ampere for 40 minutes produces. देख हो रहा है? An electrolysis of a oxy-tungsten complex using 1.1 ampere for 40 minutes produces 0.838 gram of tungsten. What is the charge of tungsten in the material? Again, second law. Second law. Sorry, first law. First law. First law. And first law, you have to just compare Charge versus Charge versus पहले स्टैंडर्ड रिलेशन 1 फैराडे यानी 965 0 coulomb. coulombs will equivalent mass. equivalent mass which is 184. 184 divided 184 by n. वही तो ढूंढना है. एंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से चार्ज कितना है 1.1 into 40 into 60 into 60. coulombs के लिए 0.838 gram. okay. So cross multiply करो and when you solve you get the n का value equal to 6. Option 1. Understood? yes Yes, sir. Yes. Okay. So I'll stop here for today. I've completed up to 5 hash. So now, before I take the next session, that is on Thursday, you will complete all the remaining MCQs up to 5 hash and start solving the MTG MCQs, everyone, up to the Faraday's laws. You can just see the topics in the MTG given and topics के according you can solve. खाली जो क्या बोलते हैं galvanic cells है, some common type of galvanic cells, only उसकी MCQs मैंने नहीं लिए हैं, बाकी आप पूरा MTG start कर सकते हो. ठीक है? Every day का even if you solve 40 MCQs, you will be able to complete around 100-120 MCQs. जितने भी है at least 120-130 भी करके रखोगे तो आगे next session के बाद you can complete it. But please solve MTG. I am observing that many of you are not solving MTG before the test. That's given for additional practice and that needs to be solved before you actually attempt your online examination. Otherwise, the purpose of giving the notes for extra practice is not solved. So also could you send the PDF for the exam schedule again? Yeah, I will share. I will send it. इस वीक के लिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आगे थोड़े चेंजेस है तो वो मैं करके अकॉर्डिंगली भेज देता हूँ अपडेट करके. Electrochemistry is on 5th, right? हाँ, दिस सैटरडे ना. यस, दिस सैटरडे ओनली ना. Yeah. हाँ, सो वही बोल रहा हूँ मैं कि बिफोर दिस सैटरडे, थर्सडे आई एम टेकिंग द सेकेंड सेशन वेरिन आई विल कंप्लीट एक्सरसाइज 2 एज वेल. So till Thursday and before the second session, you complete the MTG का MCQs, whatever number you can. At least मैंने टारगेट आपको 130 का दिया है, उतना तो आपको करना ही है without any excuses. तो 5 hash के MCQs plus 130 MCQs of MTG needs to be solved.
Okay, Yes, sir. Yes, sir. great.